Hello students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We are studying our chapter motion in a plane. Here in this video we will talk about uniform circular motion. We know that what actually circular motion is, but in case of uniform circular motion, the velocity at each and every point for that circular motion will remain same. That kind of motion is called as uniform circular motion. So here when a point object is moving on a circular path with a constant speed, then the motion of that object is said to be uniform circular motion. Circular motion तो होता है, but यहाँ पर uniform circular motion मतलब हर एक point पर velocity का same होना. Okay, so in uniform motion, the velocity at any instant is represented by the tangent drawn at that point. Actually, uniform circular motion के अलावा कहीं पर भी हमारे पास कोई भी एक curved path के along जब motion होता है, for example along this type. Okay, यहाँ पर object इस तरह से कहीं पर move कर रहा है. Now at any point, what will be the डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी? वो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो कर्व डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर जब हमें डायरेक्शन निकालना हो, इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉ दी टेंजेंट. फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. So here this statement is for any kind of motion. लेकिन हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में लिख दिया है. So here in uniform motion the velocity at any instant is represented by the tangent drawn at that point. Now here we have some point related with the uniform circular motion. The first is the time period. टाइम पीरियड क्या होता है? अगर हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा. नाउ इन द सर्कल हाउ मच टाइम इज टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सर्कल. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. सो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. स्टार्टिंग से वापस उसी पॉइंट पर सर्कल को कंप्लीट करके जब वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो कितना टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड एंड व्हिच इज मेजर्ड इन द सेकंड. Here we have another important term, that is the frequency, that is represented by nu. In some of the books you will find that it is represented by f. So the number of revolutions completed by the object on its circular path in a unit time. कि in a unit time कितने revolutions वो object, point object उस circular path में complete करता है, that is called as the frequency. Okay, and what will be its unit? Its unit is hertz. Okay, that is based on the name of the scientist. Or it is also represented by per second. Per second कैसे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का कोई भी यूनिट नहीं होती है. यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1 अपॉन टाइम. तो टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड. तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सेकंड. Now here we have a very important relation between this time period and the frequency. वो relation हम कैसे निकालेंगे? Again by using this formula, that is number of revolutions upon time. अब अगर हम यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन की बात करें, मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है पॉइंट ऑब्जेक्ट और वो वापस से इसी पोजीशन पर आ जाता है एंड देन इट कवर्स वन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया? 1. नाउ फॉर वन रिवॉल्यूशन हाउ मच टाइम वी आर कंसिडरिंग, दैट इज द टाइम पीरियड t. दैट इज फॉर दी वन रिवॉल्यूशन. तो यहाँ पर जब हम 1 यूज करेंगे तो टाइम पीरियड भी कितना हुआ? दैट इज कैपिटल T. सो इट विल बी 1/t. So it is a very important relation that nu is equals to 1/t. Sometimes you can also write it as f is equals to 1/t. This is the formula or the relation between the frequency and the time period, which is very important. Here we will derive one more relation, that is between the omega and nu. This omega, that is the angular velocity, and this nu, that is the frequency. Now here we have either relation between omega or nu, or we can also write it as the relation between omega and t. Why? Because this nu that is equals to 1/t. तो जहां पर हमारे पास nu आएगा इसको 1/t लिख देंगे तो हमारे पास relation क्या हो जाएगा? Between omega and t. Okay, now here we have to find the relation between omega and nu. First of all, what this omega is? This omega, that is the angular velocity, we can write it as the angular displacement per unit time t. ओके, ना अगर हमारे पास ये जो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक सर्कल में मूव कर रहा है एंड इट इज कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, सो आई कैन राइट फॉर वन रिवॉल्यूशन दिस थीटा दैट इज ऑलवेज इन रेडियन. सो आई कैन राइट दिस थीटा इज इक्वल्स टू 2π रेडियन. क्योंकि एक पूरे सर्कल के लिए एंगल कितना हो जाएगा? इट विल बी 360 डिग्री एंड दिस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π रेडियन. Okay, now here if theta is equals to 2π radian for one complete circle, then what will be the time period? That is the capital T, जो भी हमने देखा था, जो कि एक सर्कल में मूव करने के लिए या फिर from one point to the
again at the same point how much time is taken, that is called as the time period and that is capital T. अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी. बट हियर दिस टी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय न्यू, या तो न्यू को 1 बाय टी लिखें या फिर हम यहाँ पर टी को कितना लिखते हैं 1 बाय न्यू. सो एट द प्लेस ऑफ टी आई विल राइट हियर एज 1 बाय न्यू. सो आई कैन राइट दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. दिस इज द रिलेशन बिटवीन omega and nu, and here omega is equals to 2 pi by t. It is the relation between omega and t. So here we have the relation between omega t and omega and nu. Now in order to understand this, let us consider one example. हमारे पास कोई भी एक wheel है which is suppose making 300 revolution per minute. Okay, this is the condition. अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं 300 बाय टाइम दैट इज पर मिनट. तो इसको मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन सेकंड. तो कितना हो जाएगा बाय 60. तो कितना हो जाएगा 6 5 30. So nu is equals to 5 hertz or nu is equals to 5 revolution per second, or I can write nu is equals to 5 per second. This is how we can calculate the frequency. अब अगर हमारे पास यहाँ पर frequency है, can we calculate the angular velocity or angular speed? Angular speed क्या होता है, this omega is equals to 2 pi nu. तो कितना हो जाएगा ये 2 pi into 5. So it will be 10 pi radian per second. So in this way you can find the angular speed and the frequency. So here this is all about the uniform circular motion where an object is moving in a circle with a uniform speed.